वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। ये यूएफसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 282 के बाद वाली। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सिर्फ डेना वाइट की बात करेंगे, क्योंकि डेना वाइट एक लौता ऐसा आदमी है जिसकी बात हमें समझने की ज़रूरत है और मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग इंग्लिश अच्छी तरह बोल लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंटरप्रेट करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि डेना वाइट जो बोलता है और जो बोलना चाहता है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि डेना वाइट क्या कहना चाह रहा है आपको सही तरीके से पहुँचाऊँ। ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है। Consecutive sellout, sold out all year. Gate was 4.4 million. The fight of the night was Till and Duplessis, and performance of the night, since it's the holidays and I'm in a good mood, I gave everybody who got to finish $50,000. So ओके, सभी को पता है गेट का मतलब तो पता ही होगा। बाकी फाइट ऑफ द नाइट प्लेसिस वर्सेस टिल को मिला। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री विद इट, बट फिर भी जिसको मिला वो है 50,000 मिला होगा। इसके अलावा डेना वाइट ने ये भी डिक्लेयर किया कि जितने भी फिनिश हुए हैं आज, वैसे फिनिश मेन इवेंट के पहले ज़्यादा हुए थे प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स और अंडर कार्ड उसके भी जो होता है वो दोनों बहुत अच्छे थे, इवन मेन कार्ड से ज़्यादा अच्छे थे। तो ना इन सब में जिसको भी जिसने भी फिनिश किया उसको $50,000 में, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज पीपल। there's a lot of them. All right, so you're in a good mood. I mean, I don't know that everybody is. ये मॉर्गन है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि वो बोल रहा है कि आप गुड मूड में हो, और ये मॉर्गन है, ये हमेशा चाटने का काम करता है, कभी भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, इसीलिए उसको हमेशा पहले पूछने का मौका मिलता है। Right now, kind of a wild ending, right? I guess give us your thoughts on the main event. What are you going to do? I think the main event वो मेन इवेंट में उसके थॉट पूछ रहा है। was terrible. What are you going to do? What about the scoring of it itself? We've seen this. This is nothing new. It's like the Paddy Pimblett fight. It's like Gordon had a horrible game plan going into that third round. You think you won the first 2 rounds? सी, मैं बोल रहा हूँ कि देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइनल मैच और मेन इवेंट के बारे में क्या वो है, मेन इवेंट मेन फाइट जो है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। टुडे ने वर्ड बोला कि हाँ व्हाट कैन डू, मतलब कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है उसको मेन इवेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो पैडी पिमलेट वाली फाइट में लेके चला गया और एक प्रकार से गॉर्डन को बोलने लगा कि गॉर्डन ने गलत स्ट्रेटजी की। जो भी आदमी फाइट देख रहा है उन सभी को पता है कि पहले 2 राउंड क्लियरली गॉर्डन जीता था, बट फिर भी डेना वाइट का कहना है कि तुमने जो 2 राउंड जीते उसके बाद भी तीसरे राउंड में तुमको डोमिनेट करने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, एक्चुअली बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्मार्ट गेम प्लान ये है कि जब आप कार्ड में अहेड हो, जो कि आप हो और होना ही चाहिए, वो जजेस पता नहीं कौन सी फाइट देख रहे थे, अगर आप कार्ड में अहेड हो तो आपको तीसरे राउंड में रिस्क नहीं लेनी चाहिए, और उसके जो कॉर्नर है उसने वही किया और वही करना चाहिए था उनको। फिर भी अंकल डेना बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने पुश करने की कोशिश नहीं किया। With the judges? I mean, how do you know that? Why go in there and throw away the third round and not go in and fight your ass off and try to win? If you think you know who won what round or whatever, you're crazy. I've been doing this for 23 years. I have no fucking idea what those guys are going to do. डेना वाइट का कहना है कि मैं 25 साल से ये कर रहा हूँ और इवन मुझे भी नहीं पता कि साला कौन किसको कितना पॉइंट मिल रहा है, और ये बात में मैं डेना वाइट से पूरी तरह अग्री करता हूँ। किसी के बाप को नहीं पता कि वो जज कौन सी फाइट देख रहे हैं, उनका दिमाग क्या है, उनके लिए पर्सनल क्राइटेरिया क्या है और वो किस नज़र से देख रहे हैं, साले देते किस तरीके से हैं ये पता नहीं। मैं बता रहा हूँ बॉक्सिंग में ना हद से ज़्यादा करप्शन है, पर बॉक्सिंग में फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या रिजल्ट आ रहा होगा। What they're going to say. So, yeah. Did you have anybody winning in the main event? Did you have it? I don't even know. I started to zone out after like fucking 3 rounds. So, मॉर्गन को पूछना है कि तुमको क्या लगता था कौन मेन इवेंट में जीत रहा है। बोला नहीं, मैं आई मतलब मेरे को नींद आने लगी थी दो राउंड के बाद। I heard that Ankalaev is upset and whatever. बोला कि मैंने सुना है कि अनकलाएव बहुत अपसेट है, वैसे होना भी चाहिए बेचारे को। बोला कि वॉट एवर, यानी कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, अब आगे देखना आप। You want me to do? You got beat up the first 2 rounds and you took him to the ground. You started. What are you going to do? But I guess the question is, what do you do now, right? I mean, vacant title, a split. You do Glover versus Jamal Hill. दैट्स अ न्यूज़। एक्चुअली मैं जब वीडियो रिलीज़ किया था तभी किसी ने बताते थे, तो मैंने तुरंत जाकर देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेना वाइट ये बोल रहा था। ठीक है, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
अब उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि अब आगे क्या करोगे, वेकेंट टाइटल हो गया या फिर रीमैच होगा या वो बोले नहीं, वो जमाल हिल वर्सेस ग्लोवर तशेरा, ब्राज़ील। इसके पीछे क्या थिंकिंग है? ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ग्लोवर तशेरा होना ही चाहिए उसमें, बट मेरे ख्याल से और सभी बुक थे तो जमाल बोला चलेगा। बट इस शब्द में दो शब्द भी नहीं कि ब्लाहोविच का नेक्स्ट चांस कब है, या दो शब्द भी नहीं कि अनकलेव को नेक्स्ट चांस कब मिलेगा। In Brazil for the vacant title. Is that done? Done. Thanks for breaking some news there. Yeah, you're welcome. That's what I do. And then, oh yeah, you're always so giving, Yeah. especially on fight night. That's You love me. matchmaking on fight night. It's Christmas. And I guess I did want to can I ask you about what you thought about the Patty Pimblett score as well, but there's a lot of kind of going back and forth on that one as well. The same thing. You know what I mean? I thought that Jared Gordon's game plan in the third round was horrible. क्वेश्चन पूछा गया है कि उसके जो स्कोरिंग के बारे में क्या विचार है पैटी पिमलेट की फाइट के बारे में। तो डीना वाइट ने कहा कि जो थर्ड राउंड में उसका जो स्ट्रेटेजी थी जेरेड गॉर्डन की वो हॉरेबल थी। You know, he felt like he had the first two rounds and he went in and pushed him against the. मैं बता तुमको, अभी जो है ना, मैंने जब पोस्ट फाइट की थी तब तो नहीं देखा था, बट अभी मैं देख चुका हूँ, सारे के सारे स्कोर कार्ड देख चुका हूँ। दो चूतियों ने एक प्रकार से, एक तो मैकार्थी है, जॉन मैकार्थी, जो बिग जॉन मैकार्थी है ना, उसका लड़का है, उसने पहला राउंड, उसने और एक और जज ने पहला राउंड पैटी पेमलेट को दिया है। आप फाइट देखो और पहले राउंड देखो। अब मैं बता रहा हूँ कि क्यों दिए होंगे, क्योंकि ये जो मशीन है ना, वो आपको पिछले 1 महीने से या 2 महीने से या शायद 1.5 साल से एहसास दिला रही कि पैटी पेमलेट शानदार खिलाड़ी है, ऐसा है और वैसा है और सुपरस्टार है, और डेना वाइट उसके पॉडकास्ट में जा रहा है और डेना वाइट डिनर पे ले जा रहा है, तो मीडिया ने माहौल बना लिया कि ये बहुत खतरनाक है। आप अगर वो जो जजेस थे ना, अगर वो कमेंट्री सुन रहे होंगे, तो अगर मैंने पोस्ट फाइट में आपको बताया कि कमेंट्री जो कर रहे थे उनको लग रहा था कि बराबर की फाइट बता रहे थे पहले राउंड में, बराबर की फाइट नहीं थी। फाइट में क्लियरली डोमिनेट कर रहा था जेरड गॉर्डन जो है पैटी पेमलेट को। मतलब ये अजीब सी बात है ना, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि पैटी पेमलेट को जीतना चाहिए और पैटी पेमलेट जीता भी, पर मैं गुस्सा इस बात पे हूँ कि एक्चुअली जेरेड फाइट जीता है, जेरेड फाइट जीता है, और जजेस और कमेंटेटर और डेना वाइट, इन सबको ये लग सकता है कि पहला राउंड गलती से वो जीता था, वो नहीं जीता था। क्लियरली पहला राउंड जो है वो नहीं जीता था। Fence, and I got to go after the ref too. You know, a big fight, co-main event, third round, crowd's going crazy, and you're going to let them stand against the fence the entire fight. डेना वाइट रेफरी को भी ब्लेम कर रहा है कि वो क्लिंच जो थी, लगातार क्लिंच कर रहे थे, उनको करने दिया, उन्होंने छुड़वाया नहीं। कई रेफरी जो हैं इस मामले में इनिशिएट लेते हैं और कई रेफरी नहीं लेते हैं, ये रेफरी पर डिपेंड करता है। You know, but these are these things that happen. What are you going to do? Horrible game plan by Gordon. You know, the ref let it happen, and he threw the fight away. You know, he was doing great in that fight. He should have fought the third round. Last thing for me, you made a trip into the cage after Santiago Ponzinibbio and Alex Morono. Don't typically do that after every fight, so just want to know kind of what the message was there. Yeah, I just, you know, I just had. डेना वाइट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हर फाइट में तो तुम केज के अंदर नहीं आते हो, बट सैंटियागो पोंजिनिबियो वर्सेस सैंटियागो पोंजिनिबियो वाली जो फाइट है उसमें तुम केज के अंदर है, तो सुनते हैं क्या जवाब। I had so much respect for him. He took the fight on short notice, was winning the fight going into the third round. He rocked Ponzinibbio, and then now on the flip side, Ponzinibbio's corner that round said, "You just this is corner work. You just lost the first 2 rounds. You have to go in there and finish him." You know, and Ponzinibbio went in there, got rocked, and then, you know, kept it together and ends up finishing the fight. अब मैं बताता हूँ। देखिए, पहले तो डेना वाइट ने कहा कि मतलब जो दूसरा फाइटर था उसके लिए भी उससे इज्जत है, क्योंकि 5 दिन के शॉर्ट नोटिस से फाइट लिया, तो अभी वो आगे शायद डिक्लेयर भी करेगा कि उसको भी विनिंग बोनस मिलेगा, वैसे ही ट्वीट कर दिया था उसने, तो उसी समय सभी को पता था। उसके अलावा वो जेरेड ओ जो सैंटियागो एक्सक्यूज मी सैंटियागो पोंजिनिबियो का जो कॉर्नर है उसकी भी तारीफ कर रहा है। उसने बोला कि एक ये होता है कॉर्नर की, जो जैसे ही गया तो बोला कि दोनों राउंड तुम हार चुके हो और अब तुम्हें नॉकआउट करना है, और उसने गया और नॉकआउट किया। ये कॉर्नर होता है कि सही एक्चुअली हो भी सकता है, अगर सही में दोनों राउंड हारा है तो फिर तो नॉकआउट की ज़रूरत है, अगर नहीं हारा है तो दैट्स द डिफरेंस। मान लो दोनों राउंड जीता है तो फिर कॉर्नर की एडवाइस होना चाहिए कि फोकट की रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि फाइट अपने बैग में है।
ठीक है, ये कॉर्नर का काम होता है, हमेशा ये बोलने का काम नहीं होता है कि जाओ और नॉकआउट करो और जाके वो करो। ये बात अलग है कि अपन ऐसा बोलेगा और अगर वो मतलब फाइटर इस पे इसको अमली जामा पहनाएंगे तो फाइट एक्साइटिंग होगी। फाइट एक्साइटिंग होगी तो हमको मजा आएगा, फाइट एक्साइटिंग होगी तो डेना वाइट जैसे लोगों को मजा आएगा क्योंकि यूएफसी की कमाई होगी। बट फाइट एक्साइटिंग करने के चक्कर में अगर आप अननेसेसरी रिस्क लेते हो तो हार जाते हो, तो आपका विनिंग बोनस आपके हाथ से गया। आप हार जाते हो और बहरी मतलब कोई खतरनाक चोट लगती है तो आप जिंदगी भर के लिए उसके जिम्मेदार हो गए। उस समय यूएफसी आएगा क्या? नहीं। इट्स अ इडियोटिक थिंग टू से। And Morono fought like a stud. Not to mention the fact too that Ponzinibbio was expecting to fight a southpaw, older guy who's been in some wars, and he ends up in there with this young savage who, can crack. So just have nothing but respect for both guys. And, we give Morono his win money, too. Yeah. I'm raining tonight. Raining. That it? I'm done? No, not quite yet. Dana, what do you do with Darren Till at the moment? Obviously, he's gone through a bad streak, and tonight he had his moments, but he ended up losing again. I'm curious, what do you see as his future? I mean, that's the fight of ओके, डेना वाइट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैरेन टिल के बारे में अब तुम क्या करोगे उसकी लगातार हार के बाद, उसका क्या स्टॉक कम होगा, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। the night. I don't think his stock drops at all. If he would have went out there and got destroyed in the first round, like it looked like it was going to happen, but he did the exact opposite. He weathered that storm, stayed out of submissions, and then he comes back and you think he's going to win the fight. I thought it was an awesome fight. That's why it was fight of the night, and I don't think his stock dropped at all. And for Duplessis, ओके, डेना वाइट का कहना है कि उसका स्टॉक बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुआ। देखो, स्टॉक तब ड्रॉप नहीं होता है, एक डेफिनेशन है स्टॉक ड्रॉप होना, यानी कि हारने के बाद भी आपकी मतलब स्टॉक को बराबर बनाए रहना, यानी कि आप हारने के बाद भी आपकी इज्जत बराबर से बनी हुई है। ऐसा तभी ही होता है और तब ही होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फाइट में रहे हो, जहाँ बिल्कुल एब्स एंड फ्लोज बराबर बने रहे हो, बिल्कुल 50-50 फाइट हो। ये फाइट वैसी नहीं थी। डैरेन टिल साफ तौर पे कमज़ोर फाइटर नज़र आया और 3 फाइट हारने के बाद ये चौथी है शायद। तो आई डोंट थिंक सो स्टॉक बिल्कुल कम हुआ है। मैंने पोस्ट फाइट में भी कहा था ये बात और आज भी कह रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है कि डैरेन टिल पहले जैसा डैरेन टिल बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। what an incredible win for him. I think that slam at the end, I think that took the life out of Till. Did you hear that when they hit the ground? Yeah, that was brutal. I think that's what ended the fight more than the choke. Obviously, this is the last pay-per-view of the year. I'm curious, if you look back at 2022, what do you think of it and how the company's done? It was awesome. I mean, वो 2022 के बारे में उसके विचार मांग रहे हैं। 29 consecutive sellouts, and all the fights. इंटरेस्टिंग। 29 कंसेक्यूटिव सेल आउट था, ठीक है, बहुत सारी फाइट अच्छी थी, ये सब बोल रहा है डेना वाइट। मेरा आपसे सवाल है, आप कुछ ये अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहा है राइट, आप भी देख रहे हैं, एक आध कोई टफ क्वेश्चन पूछा गया क्या डेना वाइट से, या फिर क्रॉस क्वेश्चन? किसी ने पूछा कि अनगलायब का क्या होगा? किसी ने पूछा कि यान ब्लहोविच का क्या हो सकता है कि आगे पूछें, क्योंकि मैंने आगे देखी नहीं, शुरू की सिर्फ 5 मिनट की देखी थी। मैंने सोचा कि जब मैं एनालिसिस मतलब इसको इंटरप्रेट करूंगा आपके लिए तो तभी देखूंगा। This year have been incredible, right up until the main event tonight. But it's been an awesome year. What did you make of Raul Rosas' performance? A lot was made of him being obviously 18. Jay Parent talked a lot leading up to this, and it's a very impressive win by Raul. Listen, राहुल रोसा की जो विन है बहुत इंप्रेसिव है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? वैसे मेरा भी मानना है कि राहुल रोसा की जो विन थी वो काफ़ी अच्छी थी। and I say this all the time, UFC jitters are absolutely real. It happens to all the guys. I don't care how good you are, how confident you are, all that stuff. It's a real thing, and he overcame it tonight at a very young age. There's a hysterical meme that people are sending me tonight of him in school next week. It's pretty funny if you check it out online. But when you try to wrap your head around that and think about the tremendous pressure that this kid must be under, and to come in and fight in the UFC, it's awesome. वो एक मीम चल रहा है जिसमें वो कल स्कूल जाने वाला है। एनीवेज, ये सब तो ठीक है, बट यही कहना चाह रहा है कि ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड, मतलब बहुत इम्प्रेस है वो उससे।
यूएफसी में आना और इतने प्रेशर के अंदर फाइट करना कोई कम बात नहीं, और ये बात मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे डेना वाइट। Then obviously another big win for Ilya Taporia. What did you make of his performance against इलिया टपोरे के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है? Bryce Mitchell? He looked incredible tonight. उसका कहना है कि वो इनक्रेडिबल दिखाई दे रहा था, और मेरा भी मानना है। He went out there and absolutely dominated, and a really badass, tough kid, and he looked damn good doing it. And he called for the UFC to go to Spain. He said he's actually talked to you about this before in the past. Well, इलिया टपोरे ने शायद डेना वाइट से बात किया है कि स्पेन अगर यूएफसी जाएगी तो। what my answer to that is, we want to go everywhere. So yeah, हम हर जगह जाना चाहते हैं। yes, we want to go to Spain too. Yeah, I love it. Is there any update on UFC Africa? Dricus Duplessis was saying that if you're going to go, you should go to South Africa because they have the infrastructure. वो बोल रहा है कि यूएफसी अफ्रीका के बारे में आपका क्या विचार है, क्योंकि अब डेना वाइट कम से कम 2 साल से कह रहा है कि मेरे को एक बार अफ्रीका में जाके पेपर व्यू करना है। तो बोल रहा है कि डुप्लेसिस ने कहा है कि यूएफसी जाना है तो यूएफसी अफ्रीका में अगर जाना है तो साउथ अफ्रीका में जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है। Yeah. No, next year we're going to dive into that and start figuring out where we think we go and बोला कि इस बारे में अगले साल बात करेंगे। how we do it. Yeah. Dana back here. Yep. Dana, obviously 2022, a lot of the titles changed hands. Once again, obviously one of the best things about the sport, unpredictability, but can you just talk about that from the promotion standpoint, having so many stars go up and go down in a year like 2022? Well, I think you answered your own question. I think that it's what makes मैं आपको तभी इंटरप्रेट करूंगा जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो, कि बाकी सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं ना। the sport so awesome is that you have no idea how a fight is going to turn out, and there's so many different ways to win, so many different ways to lose, and it usually happens. It's and if you have some dominant champs like Israel and Usman, and they end up getting beat, especially the way they did this year. It's a crazy sport, man. It's so fun to watch. It's like the Till fight tonight. I mean, I don't know about you guys, but I was literally on the edge of my seat through that whole fight because it was so back and forth. And Till survived that first round. Then it looked like Duplessis was tired, and it's awesome. I don't even know what else to say other than it's the greatest combat sport in the world ever. Earlier this week, obviously the announcement about returning to London with a numbered event. Are things looking like they'll be finalized for Usman Edwards #3, or could we see a bit of a change up? लंदन कार्ड के बारे में पूछ रहा है कि लंदन में जो पेपर व्यू कार्ड होने वाला है उसमें उस्मान वर्सेस एडवर्ड्स होगा या फिर कोई और होगा। Yeah, no, that's what we're aiming for. That's what we want. We're going to go to बोला कि हम लंदन जा रहे हैं O2 अरीना में, उसी की तैयारी है हमारी। the O2, and yeah, that's it. And then my final question, just Edmund Shabazian, obviously got back in the win column after a rough stretch. Just what were your thoughts on that fight? बोला कि एडमंड शबाजियन वाज इंप्रेसिव। बोला कि विन कॉलम में वापस आ गया, उस बारे में क्या आपके विचार हैं? Good tonight. He looked good. Came in and did what he had to do. Back was up against the wall, and he came out and won tonight. I love that kid. I'm happy for him. Happy holidays. You too, buddy. Hey, Dan. Yep. Can you just walk us through the process in making this Glover versus Hill fight? Obviously, this just happened. I know Glover was here. Was Hill? वो बोला कि ग्लोवर वर्सेस जमाल हिल वाली जो फाइट है उसके बारे में आपके क्या विचार है, ये फाइट कैसे बनाई आपने? Here as well? Did you No. call him? What No. happened? We got out of the octagon. We're all bummed out in my green room in the back, and then Hunter and Mick started talking. Hunter had talked to somebody, and Mick had already talked to somebody, and they're like, "What about doing this in Brazil? We'll turn it right around and do this thing in Brazil." बोला कि हम सब ग्रीन रूम में गए और हम सब बम्ड आउट थे क्योंकि फाइट बहुत बोरिंग थी और ये था और दुनिया भर का था। फिर हमने बोला कि हंटर गैम्बल और मिक मैनर्ड की बात कर रहा है। हंटर और मिक जब बोल रहा है, हंटर गैम्बल और मिक मैनर्ड ने इस बारे में बात की कि मैंने इससे बात की है, मैंने उससे बात की है, और फिर हमने ये फ़ाइट तय कर दी। आप सोच रहे हो, ये फ़ाइट तय कर दी। अगर आप UFC की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हो तो ये आदमी जो मेरे पीछे है, ये आदमी कितने बार आपसे कह चुका है कि हम फाइट के दिन हम फाइट तय नहीं करते। कहने का मतलब है जिस दिन फाइट हुई होती है उस दिन हम नहीं जाते, फिर ट्यूसडे के दिन हमारी मीटिंग होती है तभी हम बात करते हैं। फाइट के दिन हम फाइट तय नहीं करते, और आज कर दिए। कहने का मतलब ये है दोस्त कि उनको जो करना होता है वो करते हैं। Everybody started to cheer up a little bit, and
got a lot more fun back in the green room. Yeah. So fair to say, like verbal agreements for now, contracts haven't been signed yet. Yeah. Okay, perfect. And just wanted to get an update from you. We haven't heard you in this forum talking about the betting investigation that's going on. अब पहला टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उससे पूछ रहा है कि वेटिंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या हो रहा है, वो बताओ. I know there's only so many things you can say, but is there any updates you can give us on what's going on currently? There's literally nothing I can say about that. You know, बोला कि उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, और सही बात है कि वो बिल्कुल नहीं कह सकता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वो नहीं कर रहा. खैर देखते हैं आगे क्या बोलता है. I did an interview the other day with Akamoto. It was probably the most I've said about this, and that doesn't come out till like next week. But it is what it is. There's an investigation going on, and see how it plays out. How concerning is this for you about like kind of the integrity not only of this organization but as the sport as a whole? बोला कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है कितनी सीरियस है, सिर्फ और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, पूरे के पूरे स्पोर्ट्स के लिए. Zero. I'm not worried about it at all. डेना वाइट का कहना है कि ये ज़ीरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे. मैं आपको बताऊं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है. 2 प्रोविंस हैं कनाडा के जिन्होंने ऑलरेडी यूएफसी पे बैन कर दिया है बैटिंग, और अगर और भी ज़्यादा बैन होता रहा ना तो बहुत दिक्कत होगी. बहुत सारा ट्रैफिक यूएफसी में बैटिंग वेबसाइट से आता है, बहुत सारा पैसा यूएफसी में बैटिंग वेबसाइट से आता है. बैटिंग यूएफसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर बैटिंग में गलती से भी एक आध फाइट फिक्स निकल आई ना तो भरोसा निकल जाएगा और रातों रात इनका स्टॉक गिर जाएगा. तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है. बट डेना वाइट की जगह आप भी होते तो भी आप भी यही बोलते कि ज़ीरो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको कंपनी की इज्जत बनाई रखनी है. People ask me, well, what were they talking about? Somebody was saying, well, what's the UFC going to do? We let these guys know not to bet on fights. Do you know what the outcome of this is? Like, if I penalize them, you get cut. They're going to go to fucking federal prison. Federal fucking prison. If you're that fucking stupid and somebody else wants to do it, knock yourself out. वो बोल रहा है कि लोग बोलते थे ना कि यूएफसी क्या कर सकती है. बोला कि हम तो सिर्फ ये हमने तो हमेशा बोला है कि आप बैटिंग नहीं करो, उसके बाद भी हमने मना किया और सब लोग बोलते थे कि क्यों मना कर रहे हो. और वो बोला कि अगर हम सज़ा देते तो ज़्यादा से ज़्यादा हम तुमको कट ही करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन निकालेंगे, पर अगर तुमको सरकार सज़ा देगी तो तुमको जेल जाना पड़ेगा. और मेरे ख्याल से इस केस में हो सकता है किसी को जेल जाना पड़े. There's not enough money in it to ruin your life and not go to jail. Go to federal prison. What other question do you have? I was just going to ask if there's a timeline on when maybe this could be wrapped up. Or How the fuck would I know? There's an पूछ रहा है कि कोई टाइमलाइन है क्या, तो बोला कि मेरे को कैसे बताओ. सही बात है, उसको क्यों पता होगा, वो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है. investigation going on. You think the people that are investigating call me and keep me in the loop on this? I'm not sure what you're being told. That's why I asked. Why would they tell me? There's an investigation going on a fight that's being fixed. Why would they tell me anything? I know as much as you know. Fair enough. Thank you, Dana. You're welcome. Hey, Dana. On a lighter note, Ilya Taporia, he's got bad blood with Patty the Batty Pimblett. 2 times in a row, they shared pay-per-view cards. During the press conference, they feuded. Just curious, do you have interest in booking them down the line, that matchup? ये कहना है कि पैडी पिम्बलेट और इलिया टपोरे के बीच में लफड़ा चल रहा है. क्या उनको मेन इवेंट मतलब अगले किसी भी इवेंट में बुक किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है. मेरा मानना है कि डेना वाइट जवाब दे उससे पहले मैं आपको जवाब दे देता हूँ. ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा. डेना वाइट को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाना चाहता है डेना वाइट पैडी पिम्बलेट को, और अगर इलिया टपोरे के सामने उसने रख दिया ना तो वो उस मुर्गी को उसी के सामने हलाल करके अब एक तंदूरी चिकन बना के खिला देगा. ठीक है. पैडी द फैमिली, मैं जब से आया, मैं कम से कम 6 महीने से लोगों को बोल रहा हूँ, जब से पैडी द फैमिली आया, ये आदमी एलीट टैलेंट नहीं है. इंटरटेनिंग है पर एलीट टैलेंट नहीं है. आज बहुत से लोगों ने देख लिया होगा. आज वो जैरेड गॉर्डन से हार रहा था, हारा ही था, और जैरेड गॉर्डन रैंक्ड भी नहीं है. जैरेड गॉर्डन बुरा फाइटर नहीं है, बट टॉप 15 में भी नहीं है जैरेड गॉर्डन. सोचो आप, देखते हैं डेना वाइट क्या कहता है. Patty and Ilya. I don't know. I mean, we'll see what happens. बोला कि हमको नहीं पता, देखते हैं क्या होता है. It's not anything that we're looking at right now. I mean, the way he looked tonight. I mean, this kid, what is he right now? 14. He's he after. वो इलिया टपोरे के बारे में बोल रहा है कि अभी उसकी रैंक 14 थी, मेरे ख्याल से अभी टॉप 8 या 7 के अंदर आ जाएगा. Tonight, he breaks into the top 10
You know, I'm sure that kid's looking at title. He wants the title, you know. So he's working his way this way. Lastly, any update with booking a fight with Colby Covington or Jorge Masvidal? होरे मास्टरदार और कोई कविंगटन की फाइट्स के बारे में पूछ रहा है. Two top guys in the welterweight division. I have no idea. I'm not even thinking about that shit right now. Dana, Dante, right? Yep. You spoke about the return to London. I know you guys were looking at a stadium show, and obviously you settled on the O2. How close was it to being finalised for a stadium? Well, we didn't. बोल रहा है कि आप लोग जो है लंदन फाइट्स के बारे में आपके क्या विचार है. आप लोग अलग अलग अरीना देख रहे थे और तुमने O2 में सेटल किया. इस बारे में क्या विचार है? Settle on the O2. I mean, the O2 is our spot. That's where we go. That's, you know, those guys have been amazing to us. The energy and the buzz inside that place is always, I mean, I tell everybody, if you want to go to a fight in London at the O2. It's unbelievable. People from the UK were saying, why don't you look at Cardiff? Why don't you do this? Why don't you check this place out? So I did. I mean, I looked at it. My number one big problem in England is your weather. Let's start there. Weather with an outdoor arena in February. डेना वाइट बस इन सब बकर के चक्कर में डेना वाइट सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि हमने ऐसा नहीं है कि सेटल करा है हमने O2 में. O2 ही हमारी चॉइस थी क्योंकि इंग्लैंड में वेदर ऐसी रहती है कि ओपन एयर अरीना में बहुत दिक्कत हो सकती थी. हम उस रिस्क लेने को तैयार नहीं है. वैसे अबू धाबी में भी इन्होंने ओपन एयर किया था, बट फिर भी अबू धाबी में बरसात की तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी. March or whatever, it just fucking spells disaster, I think. And it just didn't work out. A lot of different things that factored in it not working out, but I'm very happy at the O2. I know, obviously, it's not a done fight yet, but Leon was kind of like, oh, as soon as he won the title, it was like, oh, Dana wants to do the stadium show. Do you think he would be happy fighting in the O2? And, you know, obviously, he'd like to fight in a stadium, right? But for the reasons like you said, maybe it can't be done. No, it's not that it can't be done. It's like when you talk about going to certain places, like we did outdoors in Abu Dhabi. Odds are pretty good it's not going to rain. You know, when you go to these other places, I'm such a freak about the live show, the live event, and fans being there, and anything that could affect the fight, whether it's rain or wind or, you know, it's tough for me. Even in Abu Dhabi, that night that we did that, it was hot as hell outside in the middle of the night. That has an effect on the fight too. But if there's an outdoor fight, Abu Dhabi's probably the spot. And finally, what did you make of Raul Rosas' interview where he said he wants the $50,000 to buy his mama minivan? So वो बोल रहा है कि रॉब रोसा है, उसने कहा था कि उसको $50,000 चाहिए ताकि वो अपनी माँ के लिए वैन खरीद सके. तो मेरे ख्याल से उसको तो मिला होगा ना बोनस. अभी जैसे कि डेना ने कहा कि वो फिनिशिंग ऑफ could take it to the PI. I love it. He got it. Congratulations. Minivan on the way. इस मामले में डेना वाइट काफ़ी अच्छा है. कभी कभी दिल से कुछ अच्छी बातें करता है. Thank you. You're welcome. Yeah. You're right. Another young fighter, Cameron Simon, opened up the card. I know that you were very high on him during the Contender Series. I just wanted your thoughts on him. I'm sorry. I zoned out there. What did you ask me? Cameron Simon. Cameron he Simon opened के up बारे the में card. पूछा. You were very high on him during the Contender Series. I just wanted your thoughts on him. Yeah. No. You already said I like him. What more can I say about him? You know? Yeah, congratulations. I love seeing these kids come in off the Contender and do well in the big show and deal with the pressure and all the things that come along with fighting here. Once you get that out of the way and under your belt, probably going to do pretty well. You announced the theater at the Virgin Hotels on March 11th. I just wanted to know what was the decision to go there. It's a new spot, I'm guessing. What did you say? The theater at the Virgin Hotels on March 11th, the new the hotel for the fight night. It was Jamal Elvers, Anthony Smith. I just wanted to know the decision. We are? No, that's news to me. I didn't even know that. Well, thank you. Okay. Yeah. You're welcome. Aljamain Sterling versus Henry Cejudo are saying that fight is done for March. Confirm or deny that? Did we announce that? They have. They have. I guess it's right. Versus Henry Cejudo are saying that fight. Hey. I didn't even know that. Well, thank you. Okay. Yeah. You're welcome. Aljamain Sterling versus Henry Cejudo are saying that fight is done for March. वो पूछ रहा है कि हेनरी सेजुटो वर्सेस अल्जमेन स्टर्लिंग की फाइट जो है मार्च के लिए तय हो गई है. Confirm or deny that? उस बात को कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं. Did we announce that?
बोला क्या हमने अनाउंस किया? They have. बोला उन लोगों ने किया है। I guess it's right then. बोला कि हाँ ये फाइट सही है। And then any news on John Jones versus Francis Ngannou? Is that the way that you're trying to go though? जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस नगानो के बारे में कोई न्यूज़? Guys, I'm not even thinking about that shit tonight. You're asking me shit that could happen in 23, you know, possibly in the summer, and I have no idea. बोला कि मुझे पता And नहीं। finally, you did say that you're trying to do Conor McGregor versus Michael Chandler. I never. बोला कि कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस चैंडलर के बारे में फाइट करने की सोच रहे हो। मेरे ख्याल से ये बकवास न्यूज़ है ना? क्योंकि वो इंटरव्यू मैंने भी देखा है, उसमें डेना वाइट साफ साफ ये बोल रहा है कि अगर ऐसा किसी ने बोला कि अगर कॉनर मैकग्रेगर अब भी आ जाए तो फिर इसके किसके साथ फाइट कराने की आप सोचोगे? तो डेना वाइट कहता है ये चैंडलर। तो डेना वाइट ने ऐसा नहीं कहा कि इन दोनों की फाइट होनी चाहिए या हम तय कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर एकदम से कोई आ जाए, मतलब कॉनर मैकग्रेगर आ जाए, तो उसकी फाइट किसके साथ होनी चाहिए? तो डेना वाइट से एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, उसका हाइपोथेटिकल आंसर दिया गया, उसको मीडिया वालों ने न्यूज़ बना दिया। खैर मेरे ख्याल से डेना वाइट भी यही बोलेगा। Never said that ever fucking once. This is what happens when you do interviews and people listen to your interviews and he said, so if Conor McGregor came back right now, who would you be looking at as an opponent? Well, I said, well, if he did, if that happened and that scenario played out right now, Chandler would be a fun fight. Never fucking once did I say we're doing Conor McGregor versus Chandler. I don't even know when Conor McGregor's coming back. And this is why I don't like to answer these kind of questions. Because some fucking idiot somewhere on the internet puts out that that's what I said, and it's not even remotely close to what I said. People write stories off other fucking interviews with other people when they couldn't even ask proper questions. If I don't know. I was in a good mood. Now you guys are fucking killing me. I'm Sorry kidding. about that. I'm kidding. Taking the bonuses back. I might not help this mood, Dana. All right, buddy. What do you got? I wanted to go back to judging. Sorry about this. Is there anything? I know it's kind of like the tail wagging the dog, but is there anything that the UFC can do, working with the Nevada Athletic Commission, to improve the consistency and quality of judging? बोला कि जजिंग के लिए यूएफसी कुछ कर सकती है क्या? We've been doing it for years. I mean, for 23 years we've been working with these guys on that stuff. But it's not just the Nevada State Athletic Commission. It's other commissions when we go places. You have, I haven't said this in a long time, so things must be better. बोला कि मैंने बहुत सालों में पता है कि नहीं, मेरे को पता है क्या बोलने वाला, पहले सुन लीजिए। Don't leave it in the hands of these judges. बोला कि जजों के हाथों कुछ मत छोड़ो, और इस बात से मैं एग्री करता हूँ यार कि ठीक है रिस्क कंट्रोल और ये और वो, पर मैं पगला गया हूँ गलत डिसीजन से, राइट? Don't go out in the third round and think you won the first 2 rounds and push a guy against the cage when you were doing great in the fight anyway. You already were doing great in the fight. Go out and fucking fight the third round. You know? Ponzinibbio's corner told him, you just fucking lost the first 2 rounds. You need to knock him out to win this fight. Right? What you don't ever want to do as a corner is go, oh, you got the first 2 rounds. Let's cruise this round. Stay away from him. Do this or that. You know what I mean? No. I guess unless it's the Usman fight. Good point. Yeah. It was probably 4-0 in that fight, and he probably should have pushed him against the fence for the 5th round. Yeah. You know, there's what I said isn't necessarily always true, but you know what I'm saying. डेना वाइट खुद ही बोल रहा है कि उस्मान वाली फाइट में वो 4-1 से आगे था क्लियरली, और अगर वो मतलब फिर वो रिस्क लिया और कान में पड़ा और फाइट खत्म हो गई। वही तो मैं कहना चाह रहा था कि आपने रिस्क लिए और उल्टा आप हार गए तो ठीक है। एनीवेज, when it makes sense. You know, the Paddy Pimblett fight, you know, the first 2 rounds, they were both hitting each other. You don't know how one guy's looking at a fight. When rounds are that close, you don't go and give away the 3rd round. Absolutely. And just on a more positive note, it's been a big year for the UFC. What's been your personal highlight from the last 12 months? बोला कि पिछले 12 महीने में आपकी सबसे पर्सनल हाईलाइट क्या है? अच्छा साल रहा यूएफसी के लिए। I would have to say the consecutive sellouts, you know. Consecutive sellouts. To sell out, I gotta keep looking, 29 straight events. It's a big one, man. 29 का स्ट्रेट इवेंट्स जो है यूएफसी ने सेल आउट किया। वैसे 19 साल भी हो गए यूएफसी को, 29 साल सॉरी। That's not easy to do, and you know, I'm sure you guys realize too when you're there. It's so fun, the energy in the place. I mean, Orlando,
last week was even on TV. If यूएफसी का डेना वाइट का कहना है कि पिछले हफ्ते जो ऑरलैंडो में जो फाइट वीक था वो भी एक नंबर था, मतलब फाइट नाइट थी एक नंबर थी। मेरा मानना है कि वो वाला फाइट नाइट जो टीवी पे आ रही थी, वो टीवी है ना, पेपर व्यू नहीं है, इसलिए वो टीवी कह रहा है। वो टीवी पे भी जो फाइट आ रही थी ना, इट वाज बेटर देन दिस पेपर व्यू। felt like a massive major event. So I love that shit. Cheers. Thanks a lot. Thank you, Dana sir. in the back, Yep. right in the middle. Hi. Hi there. You just mentioned, so there's 29th consecutive sellouts, 29th year of the organization. You don't have your biggest name, Conor McGregor, in a fight this year. What did the organization do to really be able to step it up, especially 2 years out of the pandemic and things being opened up? Can you point to something that you were able to do outside of making particular fights? Well, that's what we always do. I mean, that's what we've always done. I mean, if you really look at it, in the last 5 or 6 years, Conor's probably fought 4 or 5 times. You know what I mean? कॉर्नर के बारे में क्वेश्चन था कि इस साल कॉर्नर ने फाइट नहीं किया, फिर भी आपका साल अच्छा गया, इस बारे में क्या विचार? तो वो बोल रहा है कि पिछले 4-5 साल में 6 साल में 4-5 ही तो फाइट किया है कॉर्नर ने। Right? Is that about right? What'd you say? 4 or 5 times in the last? Yeah. So, obviously it's great to have superstars and do big fights, but that's what we do. And why do we have 29 consecutive sellouts this year? We went through COVID. That's why. Kind of sticking with Conor McGregor, Conor has taken himself out of the USADA pool or the VADA pool, and he's talked about being able to take certain drugs or कॉनर मैकग्रेगर ने कहा था, मैं बता दूं आपको, कि वो ईसाडा के पुल इसलिए था ताकि रिकवरी के लिए कुछ ड्रग्स वो ले सकता था। to be able to recover from the type of surgery that he's had and the injury he's had. Who said that? Conor? Conor. Okay. Is there a conversation that UFC has had with the drug organizations talking about fighter recovery, not so much allowing fighters to skirt around the regulations and the type of recovery drugs that they can take, but there are certain injuries that require doctor intervention that could put them at risk for testing positive? Have you had this conversation internally and with USADA or VADA? Well, I think that the injury that you're talking about, that the only time that I've ever really seen that is breaking that shin bone. All the guys that have broken that shin bone have the same type of recovery. But as far as conversations that have happened, you'd have to ask Jeff Novitzky that. I don't get involved in the drug stuff anymore. I stay far away from the drug stuff. He's much smarter than me when it comes to that shit. So that's a question for him. Appreciate it. Merry Christmas. Merry Christmas to you too. Thank you. Dana. Yep. You said on Patty Pimblett's podcast that you would like to. You plan on being in more places on the road for fight nights this year. Yeah. Do you know approximately what percentage of the fight nights will be on? बोला कि पूछ रहा है कि फाइट नाइट में पैडी पिम्बलेट के पॉडकास्ट में कहा था कि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फाइट नाइट जो है मतलब आउटसाइड दी एपेक्स अरीना हो, तो पूछ रहा है कि कितनी फाइट बाहर होनी चाहिए। The road? I mean, if I really had my way and it works out the way that I hope it does, 100% of them will be on the road. Yeah. बोला मेरा बस चलेगा तो सारी फाइट रोड पे ही होंगी। Okay. And I talked to DC last month in New York, and he was talking about trying to get wrestlers into the UFC. And I was wondering if you have ever thought about like partnering with USA Wrestling or anything like that to go to some of their tournaments after their tournaments. Yeah, I mean, wrestling's a massive part of this sport. And, when that whole thing went on a few years ago where they were trying to get rid of wrestling from the Olympics, we fought hard to make sure that didn't happen. But, I mean, we've had a relationship where we end up with a couple of up-and-coming wrestlers. I wouldn't say that we don't have a relationship with wrestling. We do. With the USA Wrestling organization? Years ago, it always was a no-brainer for me to have a relationship with USA Wrestling. They didn't want to have a relationship with us back in the day. So, I mean, I got nothing negative to say about them, but... Do you think with the way that you've built the UFC that they'd be more open to that now? Probably. Okay. Thank you. Hey, Dana. Yep. On the Contender Series graduates we saw tonight make their debuts, you called Cameron Simon the future
earlier in the summer. So what does that make Raul Rosas? Yeah, it's कंटेंडर सीरीज के बारे में, Tonight फाइट के बारे में पूछ रहा है कि उससे फाइटर आके डेब्यू कर रहे हैं, तो उस बारे में क्या विचार है? was a big night for him. You know, he's so young. He's so young. We haven't the closest to him, I think, is Vitor Belfort when he was like 18, was fighting in the UFC. And you know, like I said earlier, for him to accomplish what he did tonight is amazing. And you know, both of these kids are studs, and yeah, they won their first fight, so it's awesome. When you look at the performances they made on their debuts tonight, how does that compare to previous Contender Series graduates that have gone on to make their UFC debuts in earlier seasons? Well, the Contender Series has been massive for us. I mean, it's been an incredible. कंटेंडर सीरीज के जो दूसरे ग्रेजुएट हैं, जैसे कि शॉन ओमैली है, उन सब के बारे में पूछ रहा है कि उनके कंपैरिजन में ये कैसा है? Way to showcase new up and coming talent. And any of you that have ever been to the Apex for those, it's incredible. It's incredible to be there live. It's one of the best shows we've ever done. And I think that the other thing that's amazing about it, much like Looking for a Fight show, is these kids come in, they're unknown, they don't even fight in the UFC yet, and millions of people know who they are before they ever. I mean, this is this kid's first fight. You hear the place tonight? I mean, it was crazy. It's like, that's the power of the Contender Series. This season of the Contender Series is the first time ever that we were trending worldwide on social media because of contender fights. So the show continues to grow. I think, you know, our contract's coming up here with ESPN, and I think that when we do our next deal, you'll see the Contender Series actually being on linear television. With Rosas being the youngest UFC fighter, there's no blueprint on how you develop as such a young combat athlete here. You know, how do you handle developing him? Well, just like any other one. You know, this kid's obviously, he's young, but he's got what a 25-year-old would have that's getting into the UFC. You know, he's special. This kid's different. He's different than a lot of other 17 and 18-year-old kids. The fact that he can come in here at that age with some of these guys that are... कुछ नहीं, अभी 15 सेकंड की और तारीफ है रोएसास की. अभी when the metal will hit the road, we'll know. When the rubber will hit the road, हमको सब पता चलेगा. बट यही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस. ज़्यादा कुछ भी सेंसेशनल या कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था ग्लोबल तशेरा वर्सेस जमाल हिल की फ़ाइट के अलावा, जिस पे हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए. ठीक है, मेरे ख्याल से यहीं रोकते हैं इसको. डेना वाइट इसके बाद जाने वाला है. बताइएगा आपको कैसा लगा, है ना, क्योंकि मुझे तो बहुत बोरिंग लगा ये वाला. आपको बताइएगा कैसा लगा, और मैं इसको करूँ या नहीं करूँ आगे, यही बताइएगा, क्योंकि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी बोरिंग नहीं होती. अब ये चूतिया इतने ईजी क्वेश्चन पूछेंगे तो इंटरेस्टिंग कैसी होगी. कभी मेरे को बुलाएं, फिर बात करते हैं अपन बैटिंग पे कि यूएफसी बढ़ावा देती है कि नहीं देती है. फिर बात करते हैं अपन यूएफसी फाइटर्स के राइट्स पे, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं. पेमेंट पे, पेमेंट स्ट्रक्चर पे, ठीक है, एक्साइटमेंट फाइट बनाने में जो फाइटर को एक्स्ट्रा रिस्क लेनी पड़ती है उस पर, इन सब चीज़ों पर बात करते हैं. बट ये जो बैठे हुए हैं ये तो यस मैन है, भेड़े हैं ये तो. एनीवेज, अब बताइएगा कैसा लगा आपको. ये था इंडियन फाइट जंकी. इंडियन फाइट जंकी में बने रहिएगा. इंडियन फाइट जंकी लड़ेंगे, जीतेंगे.